May I make a submission? Wait a minute. जुमला कैसे शुरू हुआ? Namely, Mr. Justice Naseem Hassan Shah. Full stop. And a review and the interview given by him to Mr. Iftikhar Ahmed, then associated with GEO television, and Mr. Kasuri has also referred to. आपकी CMA कौन सी है, Kasuri साहब? CM has also referred to as 5788 of 2011. 2011. And has also referred to a civil miscellaneous application number 5788/2011, wherein he has filed extracts from the book published by the said judge, titled Constitution, Law and Pakistan Affairs. Italics में कर दें. And published by locally published. ठीक है, ये किताब हमें मिल गई, so आप भी देख लीजिएगा. Full stop. Mr. Farooq Naik, let notice be issued to. I've also heard an interview of Justice Zora Patel. Justice Zora Patel ki bhi hai. We can provide the transcript as well as the video. I can do that. You will do all of these things. I'll do it. Mr. Farooq Naik states that there was also an interview given by Justice Zora Patel, and he will be providing the actual interview on a, what do you call it? On a YouTube, we'll provide a on a CD, USB plus USB, CD plus USB, oblique USB, and provide a transcript thereof. Full stop. Let notice be also issued to Geo Television because they may have some footage where they did not show. Sometimes if they cut out just important bit, to provide the entire interview that was conducted by Mr. Iftikhar Ahmed. Correct? Yes, sir. So we have covered this. So इसमें under instructions अगर sir शफीक रहमान साहब की जो ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग थी उसका क्या? सर उसकी वो ट्रिब्यूनल का वो रिपोर्ट मंगवा लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आई नहीं है अभी तक नहीं आई है सर. वो आपने फरमाया कि वो तो पब्लिक हो गई, वो पब्लिक हो गई थी. कैसे पब्लिक भी हो गया? कंप्लेंट का रिकॉर्ड था वो हाई कोर्ट से नहीं आया. प्राइवेट कंप्लेंट और एसोसिएशन informs us that it is available. जी वो हो गई थी, पब्लिक भी हो गई थी. It is only the private complaint record which the Lahore High Court could not send and which hasn't been sent thus far. उसमें रेफरेंस होगा ना रिपोर्ट में. Mr. Farooq Naik, रेफरेंस रिपोर्ट में होगा. If you go to have people standing behind you who do nothing other than show their face, we will I'm not asking you anything. Mr. Farooq Naik, you make them work. Yeah, they do work. No. We're not saying anything. Okay, I understand. You make them work. Definitely, sir. Okay, so now we are told that report is available. The report. The report is available. It was made public by the government. No, you did the Supreme Court. आप बताइए. I'm appealing on behalf of Supreme Court Bar Association, sir. Notices were sent. Okay. आसमा जहांगीर साहब को दिया था ना? No, my lord. नहीं उसमें दिया था ना notice. She was president. Yes, my lord. What about the president? Sir, he's going alive. I know you are the secretary. Do you represent the president? No, sir, secretary. I'm secretary, sir. No, we know you are a secretary. President, sir, वो बाहर गए, sir. इसमें मजीद लिख दें. इसमें लिखें. In an earlier order, the Supreme Court Bar Association was also issued notice, and
the late Ms. Asma Jahangir was representing SCBA. Full stop. In case SCBA wants to be the representative before this court, let them nominate a counsel of their choice. अगर पाकिस्तान बार काउंसिल को भी कर दें सुप्रीम कोर्ट बार के साथ, I don't know, they may not be interested. अफरीदी साहब जो थे ना, अफरीदी साहब नुमाइंदे करते पाकिस्तान बार काउंसिल के, जैसे तो जो भी आ जाए, we can't force him to come. No, but we can't force him. If he's alive, then he should come. And his father. No, we're not. Again, Kasuri Saab, it's not a question of defending anybody. It's just a question of a presidential reference. If he wants to come before us, certainly we'll hear him. We will not stop anyone unless it's completely irrelevant. Then we won't allow, or people coming and using the rostrum to make some sort of a speech. That's what we won't permit. We will only hear constitutional and legal arguments, particularly pertaining to the scope of the advisory powers, and if we are satisfied, we proceed further. How to proceed further, those are aspects which we will consider. Ji. Isme, please write further. With regard to the matters, we expect to be assisted on the questions which have already been framed by this court, by the learned, by this court. Full stop. Office is directed to send a copy of the reference along with all orders to the learned amicus to attend to the reference and the questions noted in order dated 21 April 2011, as well as those mentioned herein. Now, we may add after discussion some or better formulate questions later, but these are just roughly what we are saying. With regard to the criminal aspect of the case, we need to be assisted on the scope of direct criminal trial in a murder case by the High Court. Precedents in this regard, the scope of whether there was any objection. How the trial came to be conducted by the High Court, and if there were any objections to the trial being conducted by the High Court, and if so, how the same were attended to, how the objections were attended to. Full stop. We also need to be assisted on the evidence, the significance of the evidence of approvers. Anything else? That's it, sir. There's a question of motive as well, because the case turned on the question of motive, but that is... Why is he not coming forward? Evidence. मोटिव पे जी साहब आपने ये भी देखना कि ये जो इंटरव्यूज होते हैं इनके रीजंस क्या होते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, मकसद क्या? Question of motive तो था in the context of motive of the former Prime Minister in regards to the commission of offence. सर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट But यहाँ पे bias का question बाइस, लीगल बाइस बड़ा इम्पोर्टेंट है। लीगल बाइस ये बताएं शाहिद साहब कि have you read the judgment? Exactly, sir. Any criminal issue that you want attended to? Come to the mic. हमने तो बेसिकली एक अप्रूवर का इशू रेज किया है कि अप्रूवर के स्टेटमेंट के ऊपर admissibility of the confession, sir, since the person Confession of whom? confession of Masood approver, sir, Masood Mahmood. The comma इसमें लिख दें admissibility or otherwise of the confessional statement of an approver.
and the scope and its application to co-accused. Exactly, sir. Okay. And then the legal bias in the Legal bias will be the constitutional or criminal? criminal होगा sir, not constitution में तो आपने 186 के parameters Legal set करने हैं. the question of legal bias, Legal bias. if any. If any. Anything else? That's it, sir. Okay. सर इसमें एक जो आपने नाम लिखा है अंडर इंस्ट्रक्शंस फैसल सिद्दीकी का नाम we object to the name of फैसल सिद्दीकी as amicus. Why? Because of reasons क्या कहते हैं government reasons क्या कहते हैं. There are reasons behind it. I don't want to disclose it in the bus. We object to it. हम देख लेंगे, आपस में डिस्कस कर लेंगे. कसूरी साहब, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है इसमें जो किसी नाम पे? कोई और नाम आपको याद आ गया बता दें. कोई और नाम आपको याद आ गया हमें बता दें. Private वो हमने कर लिया उनको. ठीक है. वो तो आ गई ना तो हम we will discuss amongst ourselves. ठीक है. So please don't consider this the order. No. Wait for the written order. Right. We know. It's always good to state what is in our mind. Written order is the only order. Anything else you want to say? Or have we covered everything? आप बोल देना. Salman Sabda क्या? We will fix it in the second week of January. The week starting 15th January. Sir, another name which we are Mr. Salman Sabdar's name. वो आ गया. And we object to it. Oh, you object to it. How do you objection करते हैं? Mr. Salman Sabdar. Under instructions I'm stating. वो तो कोर्ट के फ्रेंड्स ये आप पर है सर. No, friend, the presidential reference the Attorney General is conducting. जी. So, वो सर क्या हम कह- नोटिस पर हैं तो इसलिए आपसे दरख्वास्त ऐसा इस्तेदा है. चलिए, we will discuss amongst ourselves. We will discuss amongst ourselves. सब ये आपके लिए नहीं, हम अपने लिए लाए हैं. हमारे सिस्टम के लिए है. You know, okay, all who come in. नहीं सर thank you. Yeah, one thing we should clarify. It will be in January. We will fix a date in January, and then it will proceed day to day. But I'll have to check with all the judges their availability. So we'll give a date later, what the particular date is, and then please. We just want to finish it. No Start adjournment. तो आप करेंगे ना. Constitution asked at 186 पर. Once we cross the hurdle, then we come to the criminality of the case. And we want to and one आपने hurdle कर दिया है सर. all briefs, all concise statements and briefs by learned amicus to be submitted we'll put a date before that. So we should come to court having read those. And you would have also read each other's Yes, sir. ones. We'll move some CM also for bringing to certain documents, additional documents on record. I'll do that. Before the date of hearing, I'll do that. No. Not then. Do it today, tomorrow. We'll incorporate it in the order right now. Okay, sir. Otherwise, it will get delayed again. If you want to delay it, fine. No, we don't want to delay it. We want to delay it. We just give us 2 days, sir. Only 2 days. No. By tomorrow, we'll do it. By today. By tomorrow. By sir, this evening. We'll file the CM by tomorrow. No CM, you just tell us what documents they are. Sir. Okay, you want to give a CM by Sir, tomorrow. वो जो 12-11 के अंदर है ना. Okay, then the order will not be signed till tomorrow. No, sir. The documents which are mentioned in the Mr. Farooq Naik, Yes, sir. please submit it by tomorrow. Okay. We will, if it considered necessary, will incorporate that in the order today. Okay. Otherwise, we'll have to wait for the next date of hearing to pass an order, which will further delay the matter. We will file- You've understood it? So tomorrow file it. So we won't sign this order till today. And if we find it necessary, we'll incorporate those things in the order as well. By mid-afternoon tomorrow, it will be filed. Before mid-afternoon. Anything else? it is January. G, we would want your assistance as well. Thank you, gentlemen. Thank you, sir.
जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी थी। समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आईनी फौजदारी मामलात के माहिरीन को मुआवन मुकर्रर करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अदालती मुआवनीन को नोटिस जारी करके जवाब लिया जाएगा। आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया गया है। आखिरी बार सदारती रेफरेंस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से यह रेफरेंस उसके बाद नहीं सुना गया और जेर इल्तवा रहा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या रेफरेंस की जल्द समाअत के लिए दरखास्त आई थी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि उन्हें इस बारे में इल्म नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस 11 साल से मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि रेफरेंस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ, ये जवाब तो अदालत को देना चाहिए। इसी पर मजीद तफसील जानेंगे। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मरियम, आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से क्या तफसील है आपके पास? जी, सुप्रीम कोर्ट में आज जुल्फकार अली भुट्टो केस की रेफरेंस की समाअत हुई और ये इस रेफरेंस की समाअत आज 11 साल बाद हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नए अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए और अदालत ने जो रेफरेंस की मेंटेनेबिलिटी है यानी काबिल समाअत होने का मामला है उस पर सवालात उठाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा है कि जो मामला यानी जुल्फकार अली भुट्टो की सजा का मामला सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है, वो हतमी हो चुका है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा हो या बुरा, उसको दोबारा छेड़ा नहीं जा सकता। पहले अदालत को इस बात पर मुआवनत दी जाए कि किस तरह इस मामले को दोबारा से जो है वो शुरू किया जाएगा। अदालत ने इस मामले पर 9 अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए हैं। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक को जो है वो अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है। फौजदारी मामलात के ऊपर वकील ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है। सलमान सफ्तर जो कि लाहौर से एडवोकेट हैं, उनको भी अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जो केस में आईनी सवालात इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी जो है वो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए हैं। रजा रब्बानी जो कि सेनेटर भी हैं, उनको किया गया है, अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है। उसके अलावा बैरिस्टर सलाहुद्दीन, फैसल सिद्दीकी और उसके अलावा जाहिद इब्राहिम जो कि लॉयर है और यासिर कुरैशी, उनको अदालती मुआवन मुकर्रर किया है। अदालत ने बार काउंसिल्स को भी नोटिस जारी किए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में ये जो जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत थी तवील चली। अदालत ने बराह रास्त नशियात भी इसकी की और ये अदालत ने इसको जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी किया है और ये कहा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में जब इस केस की समाअत होगी तो रोजाना की बुनियाद पर होगी और उसमें कोई भी जो है वो जाएंगी। अदालत ने कहा है कि हम इस मामले पर फैसला करना चाहते हैं। अदालत ने इस केस की समाअत को जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दिया है और सदारती रेफरेंस पर समाअत और बेंच की अवेलेबिलिटी पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में की बाकायदा तारीख भी देगी। ठीक है, समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है और जब समाअत दोबारा शुरू होगी जनवरी के दूसरे हफ्ते में तो रोजाना की बुनियाद पर होगी। बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार अली भुट्टो केस में 9 अदालती मुआवन भी मुकर्रर कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है कि जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक को अदालती मुआवन मुकर्रर किया जाता है। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक की मुआवनत उनकी रजामंदी से मशरूत होगी। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक अदालत की मुआवनत के लिए तहरीर जवाब या ज्यादती हैसियत में पेश हो सकते हैं। फौजदारी मामलात पर अदालत की मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुआवन मुकर्रर किया जाता है। बैरिस्टर सलमान सफदर को भी अदालती मुआवन मुकर्रर किया जाता है। आईनी मामलात पर रजा रब्बानी, खालिद जावेद, सलाहुद्दीन अहमद अदालती मुआवन मुकर्रर पाए हैं। वकील फैसल सिद्दीकी, जाहिद इब्राहिम और यासिर कुरैशी भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहा था वो पेपर ले आए, सारा कुछ ले आए। अगर कोई चीज मेरे पर आप कहें जी हमारी तो हर चीज अप्रूवल हो चुकी है, सब कुछ हो चुका, मैंने कहा था वो कागज ले आए। अगर उसमें हमारे पास हुए तो हम जरूर उसको एंटरटेन कर लें। अभी तक तो वो कागज मेरे पास नहीं पहुंचा। पैसे दे हम मेरा सवाल आपसे वही है, मैंने कहा था वो कागज ले आए, मैं उसी को प्रोसेस कर दूंगा। अभी तक मेरे पास वो महीना डेढ़ हो गया, कागज नहीं पहुंचे, तो जिस दिन वो आएंगे मैं शुरू कर दूंगा। 6-7 साल से इसी बात पे सियासत हो रही है सहाफियों के साथ। कॉलोनी मैं तो कोई सियासत नहीं कर रहा। नहीं सर, मैं मुकामी बात कर, कॉलोनी मिल गई, मंजूर हो गई, पैसे ट्रांसफर हो गए 35 करोड़। 35 करोड़ एक सेकंड ना, आपकी कॉलोनी मंजूर है, मुझे कागज दिखा, मुझे कागज दिखा दे। अगर मेरी बात पूरी हो लेने दें तो आपको 35 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गया एफडीए के पास, लेकिन उस दिन 7 साल बाद हमें पता चला कि कुछ भी नहीं है। तो सर आप भी सहाफी हैं, हमारे सीनियर हैं, आपको सारे मसाइल का पता है, क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। दुआ करें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर करके जाऊंगे, कुछ ना कुछ जरूर करके जाएंगे। फैसलाबाद के जर्नलिस्टों के लिए जरूर करेंगे, वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह।
लाइसेंस के वाले सर आपने एक ही दफा बहुत ज्यादा फीस में जी नए साल से लोग डरे पड़े हैं, रश पड़ गया हुआ है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जियो न्यूज में अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। सोशलाइजिंग की गेम को करो नेक्स्ट लेवल विद यूफोन 4G सोशल प्लस ऑफर। एंजॉय 15 GB